first question of exercise 6.3. It is given that state which pair of the triangles as shown in the diagram are similar. Write the similarity criteria which you used the answering the question, and we have to also write the pair of similar triangles in the symbolic form. तो हमें 3 आंसर देना है. कौन सा क्राइटेरिया यूज किया हमने, विच क्राइटेरिया वी यूज, विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और थर्ड जिसको हमें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है. सो लेट्स गो फॉर दिस वन. तो अगर हम देखें कि व्हाट द ट्राइंगल्स आर गिवन, द ट्राइंगल्स आर एबीसी एंड पीक्यूआर. सबसे पहले ये करना है, वी हैव टू राइट द नेम. उसके बाद let's write down which values are given, which part and which values of that triangle is given. So in triangle ABC, the values of angles are given. Angle A is given 60, B is given 80 and C is given 40. Similarly in triangle PQR, they have given the value of angles. So let us note it down. P is 60, this is 80 and this is 40. So the first I have written that which corresponding parts values are given. तो यहाँ पे एंगल्स ही दिए हैं. तो ऑब्वियसली अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्राइटेरिया होना चाहिए एंगल. बट लेट अस चेक वेदर दे आर सिमिलर और नॉट. इफ 160 तो यहाँ पे भी 60 है, सो दैट मीन्स A इज इक्वल्स टू P, B is 80, Q is also 80, so B is equals to Q. C is 40, so R is also 40. So we can say that this tree, that is the parts, we can say the angles are given. So first question का answer मिल गया, which part? So we can say all the angles. Whether they are similar, so we can say yes, they are similar triangles. हम कौन सा criteria use करेंगे? So we can use the criteria obviously angle. Now let's see that symbolically. तो as I explained in the earlier videos, A किसको corresponds कर रहा है? P को. तो A first, so P comes first. B corresponds to Q, B second, Q second. C corresponds to R, C corresponds to R. हम यहां पे लिखेंगे by using angle criteria. So thus the sum has to be done. स्टूडेंट्स अगर आप इसको एबीसी की जगह बीएसी लिखोगे तो ये भी चेंज होगा, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर. लेट्स सी फ्यू मोर क्वेश्चंस. लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट वी राइट डाउन दैट व्हिच ट्रायंगल्स दे हैव गिवन. सो देयर आर टू ट्रायंगल्स, दैट इज एबीसी एंड पीक्यू. नाउ लेट्स राइट डाउन व्हिच पार्ट वैल्यूज दे हैव गिवन. तो हमें यहां पे दिख रहा है फ्रॉम द डायग्राम दे हैव गिवन द लेंथ ऑफ साइड्स. तो AB, BC और AC. AB is 2, BC that is 2.5 and AC that is 3. Same they have given the length of the sides PQ, QR and PR. So let's note it down. PQ is given 6, QR is given 4 and PR is given 5. Now we have to show the similarity for the sides. So obviously side criteria देखना पड़ेगा. And for side criteria, we know that sides are in the proportion or in the same ratio. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, अगर मैं ए बी साइड यहां पे लू तो मैं यहां पे कौन से साइड के साथ उसका प्रोपोर्शन बताऊं. सो लेट मी टेल यू द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू एक्सप्लेन. मैं ए बी के साथ यहां पे कौन सा साइड प्रोपोर्शन में लू. रिमेंबर दैट ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड. इन ट्राइंगल एबीसी, AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, तो हमें PQR का सबसे स्मॉलेस्ट साइड लेना है, दैट इज QR. रिमेंबर द स्टूडेंट्स दिस थिंग. हम ट्राइंगल एबीसी में से जो भी साइड ले रहे हैं, मतलब मेजरमेंट्स में वो सबसे छोटा है, तो PQR में भी सबसे छोटा साइड हम उसको करस्पॉन्ड्स बताएंगे. सो दैट इज 2/4, दैट वैल्यू इज 1/2. अब BC इज द मिडल वैल्यू, तो यहां पे मिडल वैल्यू है 5, तो BC अपॉन PR. सो इट इज 2.5/5. So we can see again it is 1/2.
And the third one, it remains AC, which is the largest, upon PQ. So that is 3 by 6. Again it comes 1 by 2. So we can see here that again all the sides are come in the same ratio. तो हम लिखेंगे AB upon QR is BC upon PR is AC upon PQ. तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे हम कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स है बाय यूजिंग द साइड 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 क्राइटेरिया. अब हम बताएंगे करस्पॉन्डिंग्स बिटवीन द ट्राइंगल्स. तो एबीसी करस्पॉन्डेंस. तो एज वी डिस्कस इन द अर्लियर वीडियोस हम ए के साथ किसको करस्पॉन्ड्स बताएंगे. सो लेट अस चेक हियर इन द अबव टू साइड्स विच इज कॉमन वर्टेक्स बी और यहां पे कॉमन वर्टेक्स है आर. तो बी करस्पॉन्ड्स विथ आर. बी करस्पॉन्ड्स विथ आर. बी सेकेंड आर दूसरा. बी के साथ आर है तो ए के साथ क्या आना चाहिए क्यू. ए फर्स्ट क्यू फर्स्ट. सो ऑटोमेटिकली सी के साथ आएगा पी. हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया साइड 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 क्राइटेरिया. सो इट इज क्वाइट इजी. आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन. लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. द थर्ड डायग्राम. अगेन देयर आर टू ट्राइंगल्स गिवन दैट इज LMP and another is DEF. Again they have given the length of all the sides, so let's note it down. LM is 2.7, PM or MP you can write 2 and LP or PL you can write 3. For DEF, DE is given 4, EF is given 5 and DF is given 6. Now अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है सो ऑब्वियसली साइड 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 क्राइटेरिया एग्जिस्ट होगा. बट लेट्स सी वेदर दे एग्जिस्ट सिमिलरिटी और नॉट. तो सबसे पहले PM विच इज द स्मॉलेस्ट साइड आई हैव टेकन और यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है DE. सो इट इज 2 by 4 सो इट कम्स 1 by 2. लेट्स गो फॉर द मिडल वन LM and the middle is EF. So as it is 2.7 and this is 5, so we can say that this value does not equals to 1 by 2. ये वैल्यू 1 by 2 नहीं आ रहा है, it comes something different value. अगर यहाँ पे 2.5 होता तो it comes 1 by 2. ये तो होगा 27 upon 50, तो कुछ अलग वैल्यूज हैं. तो here we are absolutely clear. हम अगर थर्ड साइड देखेंगे मगर सेकेंड में we can see that the two sides are not similar. और यहाँ पे तीनों साइड्स दिए, ये दो साइड्स सेम रेशियोज नहीं है तो हम कह सकते हैं दिस टू आर नॉट सिमिलर ट्राइंगल्स. आई होप इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. देयर आर टू ट्राइंगल्स गिवन M and L and PQR. Again let's write down the length of the parts which are given here. MN is given 2.5, ML is given 5 and the angle M is given 70. Let us go here. PQ that is given 6, QR that is given 10 and angle Q that is given 70. So here you can see that angle M is same as angle Q. So one angle is given and rest of the two sides. So if they are similar then side angle side criteria can be exist. Now let's see for the rest of the two. If I take ML which is the largest among these two, so it should be corresponds with QR. So 5 by 10 that's 1 by 2. Let's do the rest one that is MN upon PQ. So this is 2.5 upon 6. We can say this value does not equals to 1 by 2. So here we'll come to the conclusion that ML upon QR is not equals to MN upon PQ. Angles are equal but corresponding sides are not in proportion. So we can say that these two are not similar triangles. I hope again it is quite easy to understand the similarity between triangles. Let's go for one more question.
Here the two triangles, that is ABC and DEF, are given. The values AB is given 2.5, BC that is 3, and angle A is given 80 degree. Here EF is given 6, DF is given 5, and angle F is given 80 degree. Let's go for this. These are the two angles which are given equal. Let's see the rest of the two. AB is the smaller among these two. That is DF for this triangle. So it is 2.5 upon 5. So it is 1 by 2. Another, that is BC upon EF. That is 3 by 6. So it is again 1 by 2. So here you can see that the sides are in proportion and angles are also equal. One angle. But one very important part which you have to observe, that which is the included angle here? It should be B, which is common, and here included is F. तो F यहाँ पे दिया है मगर यहाँ पे एंगल A दिया है, which is not included angle. This could be, you can see here that AB और BC का included angle B है और यहाँ पे the value is given A. So we can say that these two triangles are not similar. I told you the reason. Here it must be included angle. F is included for this two. The same we require the included for AB and BC. That should be B. मगर यहाँ पे B value नहीं दिया है. A is given. So we can say these two triangles are not similar. Let us see the last number of this question number 1. This is an interesting question. There are two triangles given, DEF and PQR. Angle D is 70 and E is 80. Angle Q is 80 and R is given 30. तो यहाँ पे लग रहा है कि E and Q they are same but these two are not equal. तो हम बोल देंगे सीधा कि this triangle are not similar. But just wait for a minute. Let's find out the third angle of this triangle by using angle sum property. So 180 minus sum of this two. So it's 180 minus the sum of this two is 150. So that is 30. So you can see that obviously this third angle is equals to this one of the angle of a triangle. अगर आपको ये angle P ढूंढना है तो again you can find out using the angle sum property. 180 minus sum of this two. So 180 minus 110. So that is equals to 70. Now you look at this. This is again equals to one of the angle. तो यहाँ पे सीधा कैलकुलेशन हो गया. That angle D is equals to angle P. Angle E is equals to angle Q, which is already given. And F is equals to R. So you can see that the corresponding angles are equal. So these two triangles are similar triangles. So let's see that the similarity. D is congruent equals to P. So D corresponds P, E corresponds Q, and F corresponds R. And the criteria we used, that is angle criteria. So now I hope you understand the criteria and how to show the correspondence.